वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था बीसीए 6 सेमेस्टर का, उसके आंसर्स देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। हर बार की तरह जो सिंपल भी पूछे जाते थे, इसमें मुझे हार्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन से चलते हैं। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है एसएनएमपी की फुल फॉर्म बताइए। एसएनएमपी स्टैंड्स फॉर, तो एसएनएमपी की आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल है। और ये यूज होता है। इट इज ए प्रोटोकॉल यूज फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेज डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क फॉर मॉडिफाइंग द दैट इंफॉर्मेशन टू चेंज डिवाइसेस बिहेवियर। तो नेटवर्क को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंपोनेंट ऑफ एसएनएमपी आर्किटेक्चर। तो एसएनएमपी के तीन हमारे क्या होते हैं, थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। एनएमएस, मैनेज डिवाइसेस, और एमआईबी। द थ्री: नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेज डिवाइसेस, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। और टीसीपी इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एसएनएमपी आर्किटेक्चर बिकॉज एसएनएमपी किसे टिपिकल यूज करता है, वो यूज करता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को। एसएनएमपी किसे यूज करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को। What is the primary function of network management system is an SNMP? अब नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है? टू स्टोर नेटवर्क डेटा, या टू मॉनिटर एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस, टू ट्रांसमिट एसएनएमपी ट्रैप, या टू कंपाइल एमआईबी डेफिनेशंस। तो ये मैनेज, मॉनिटर करता है और मैनेज करता है नेटवर्क डिवाइसेस को। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which version of SNMP introduced the community based security model? तो SNMP version 1 introduced the community based security model where access is controlled through community strings like public and private. What is the primary disadvantage of version 1 of SNMP in terms of security? Lack of authentication. It uses plain text community strings, making it very insecure, especially on public and sensitive network. तो ये क्या करता है? नो रियल ऑथेंटिकेशन, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Which SNMP version introduced the concept of SNMP view to restrict access to certain portions of the MIV? तो वो वर्जन थ्री, थ्री वर्जन होते हैं इसके, वर्जन वन, वर्जन टू, वर्जन थ्री। इट इंट्रोड्यूस, जो वर्जन थ्री है, इंट्रोड्यूस एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूड SNMP व्यूज। ये तो वर्जन थ्री में हमारा क्या होता है, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं। What is the primary advantage of version 2 over version 1? Better error handling। क्या होता है इसमें? इसमें बेटर एरर हैंडलिंग करी जाती है वर्जन 2 में। Which protocol is commonly used for communication between SNMP manager and agent? तो ये वो होता है यूडीपी, अभी बताया था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। SNMP versions introduce the concept of SNMP information message for reliable delivery of traps। तो वो कौन सा वर्जन है? वर्जन टू, SNMP वर्जन टू यू। Inform message. What is the primary function of management information base? MIB पूछ लिया है इन SNMP। देखिएगा, सब SNMP के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो MIB बेस का मतलब क्या होगा? टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ मैनेज ऑब्जेक्ट्स। बी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which version of SNMP introduced the user-based security model? तो user-based version 3 introduced user-based security model, USM. What is the purpose of SNMP trap in network management system? So it notify the SNMP manager of significant events. C option is the right option. Which protocol is commonly used to transport SNMP version 3 message securely? The word TLS, transport layer security, can be used for SNMP version 3 for secure communication. Which SNMP version provides supports for cryptographic security features such that encryption or authentication? SN वो version 3 है, authentication और encryption के लिए। What is the primary function of SNMP v3 USM? तो ये क्या करता है? to authenticate SNMP message. Which of the following is not benefit of SNMP version 3 over SNMP version 1 or 2?
better performance. What is the purpose of SNMP agent? तो ये क्या करता है, नेटवर्क के डिवाइसेस को मैनेज करता है. विच एसएनपी वर्जन यूजेस कम्युनिटी स्ट्रिंग फॉर ऑथेंटिकेशन? वो वर्जन 2 था. यू वर्जन 2 का सी. बोथ एसएनएमपी वर्जन V1 एंड V2 C यूज कॉमन स्ट्रिंग. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच एसएनपी वर्जन इज रिकमेंडेड फॉर यूज इन मॉडर्न नेटवर्क मैनेजमेंट एनवायरनमेंट? तो वो है वर्जन 3, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी भी, ऑथेंटिकेशन भी, एक्सेस कंट्रोल भी. Which term describe individual who attempt to gain unauthorized access to computer system? तो वो होता है intruder. Are individual who try to gain unauthorized access. B option is the right option. What is the primary function of Kerberos in network security? तो वो क्या कहता है, authentication. ये एक network authentication protocol है that provide secure identity verification. Which protocol is commonly used for secure email communication? तो S/MIME. Secure multipurpose internet mail extension. What cryptography algorithm is used to in pretty good privacy? PGP में हम RSA यूज करते हैं. PGP uses RSA. Which of the following is not a component of hexadecimal 509 standard? तो ये simple mail transfer protocol SMMT. SMTP. It defined the format of publicly certified component included CA, CRL, CSIR, or SMTP is an email protocol not part of the hexadecimal 509 standard. What does S/MIME? Secure Multipurpose Internet Mail Extension. In Kerberos, what is the function of the Key Distribution Center? KDC क्या काम करती है? Issued Ticket Granting Ticket. Issues Ticket Granting Ticket. TGT का काम करती है KDC. What is the purpose of Certificate Authority? तो ये क्या करती है? Issue Certificate करती है hexadecimal 509 में. Which authentication service provider a centralized database of user credential? Kerberos. Kerberos uses a central server, the KDC. What does PGP stands for in network security? Pretty good privacy. Which of the following is not true about hexadecimal 509 certificate? They can be decrypted by anyone. What is the primary role of digital certificate in the hexadecimal 509 infrastructure? So option B, authenticate users. A digital certificate help authenticate identities by binding a public key with an identity using a trusted certificate. Next, which encryption algorithm is commonly used in S/MIME for securing email messages? तो वो है AES, Advanced Encryption Standard. What is the primary purpose of KDC in Kerberos? To issue ticket. क्या करती है ये? Issue ticket. Hexadecimal 509. What is the function of certificate revocation list? CRL. It lists revoked certificate. Which protocol is commonly used for secure remote authentication within a network using ticket? वो Kerberos है, ticket के through. What type of cryptography is primarily used in PGP? तो वो hybrid. PGP uses a hybrid approach. It combines asymmetric encryption for key exchange and symmetric for message encryption. What component of Kerberos is responsible for authenticate user and services? So authentication server है उसके बाद. What does the acronym TGT stands for in the Kerberos authentication protocol? तो ticket granting ticket. इसे ticket granting service भी कहते हैं. Which of the following is a disadvantage of using a directory service for authentication? वो है option B, single point of failure. What does S/MIME provide in email communication? Digital signature for encryption.
क्या प्रोवाइड करता है? डिजिटल सिग्नेचर फॉर एनक्रिप्शन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन हेडर इन आईपी सेक्शन? तो ये क्या कहता है? इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ऑथेंटिकेशन हेडर? कॉन्फिडेंशियलिटी। Authentication header provide integrity, authentication, replay protections, but it does not provide the confidentiality. In IP section, which protocol provide encryption service for authentication? तो वो है ESP, encapsulating security payload. ESP stands for, in the context of IP section, ESP stands for encapsulation security payload, which offer confidentiality, integrity, and optional authentication for IP packets. Which IP section components provide confidentiality, integrity, and optional authentication? वो ये ESP. What is the purpose of security association in IP section? To establish a secure tunnel. Which protocol is used to negotiating security association in IP? तो वो है IKE, Internet Key Exchange. What does IKE, Internet Key Exchange? बहुत डायरेक्ट भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। Which phase of Internet Key Exchange involve the negotiation of security parameter? Phase 1. Which key management protocol is commonly used IP section VPN deployment? So वो है IKE. C option is the right. Internet Key Exchange. Which in IP section, what is the purpose of the security parameter index? So वो है to uniquely identify a security association. What is the function of security association database? SAD. तो ये क्या करता है? To manage encryption key. B option is the right option. Which key management protocol is used as manually keying in IP section? तो वो है B, Simple Key Exchange Protocol. What does KMP stands for in the context of IP section key management protocol? Which phase of key internet key exchange establishes a secure channel for exchanging keying material? तो वो होता है phase 1 में. विच आईपी सेक्शन कंपोनेंट प्रोवाइड एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन? तो देखिएगा, अगर आपने आईपी सेक्शन पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा ऑथेंटिकेशन हेडर के थ्रू होता है। आईपी सेक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेफी हेलमैन एक्सचेंज? टू नेगोशिएटिंग एनक्रिप्शन कीज के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस इन आईपी सेक्शन? टू स्टोर सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which phase of internet key exchange established IP section security association? तो phase 2 करता है वो। B option is the right option. What is the main advantage of using IP section for securing network communication? तो वो protecting against eavesdropping and tampering. What is the primary purpose of SSL and transport layer security protocol? तो वो क्या करता है? To secure web communication over internet. Which of the following is not a requirement for secure communication over net? तो वह है scalability. C option. Which cryptography protocol is the predecessor of transport layer TLS? तो वह है SSL, Secure Socket Layer. Secure Socket Layer. Next question. Which layer of OSI model do SSL and TLS operate on? तो वो है session layer पे. What is the primary function of SSL and TLS? Provide secure communication channel करते हैं इन दोनों। Which protocol is commonly used secure email communication? तो वो आपका करेगा TLS. What cryptography algorithm commonly used in SSL and TLS for key exchange? तो वो RSA. Which of the following is not a securely feature provided by SSL and TLS? Data compression. Data compression का फीचर नहीं होता इसके अंदर। ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। What is the primary role of the SSL handshake protocol? तो क्या establishing a secure connection के लिए हम handshake कर करते हैं? Which version of SSL introduced verifying security leading to its deprecation? तो वो है SSL 2.0. What is the primary purpose of
SET सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, तो क्या होगा? सिक्योर ऑनलाइन शॉपिंग, फाइल ट्रांसफर, सिक्योर ईमेल, तो ये होगा सिक्योर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए SET प्रोटोकॉल यूज करा जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप SET प्रोटोकॉल, तो वो करा था वीजा एंड मास्टर कार्ड, सी ऑप्शन। SET was developed jointly by Visa and MasterCard to provide secure credit card transactions over internet. In the context of SSL TLS, what is the certificate authority responsible for? So issuing digital certificate के लिए वो है, valid. Which cryptography protocol is commonly used for securing web browsing session? HTTPS होता है वो। HTTPS hypertext transfer protocol secure. Which component of SSL TLS is responsible for negotiating encryption algorithm and exchanging cryptographic keys? तो वो है handshake. Which version of TLS address vulnerabilities found in SSL 3.0 and its predecessor? So what TLS 1? TLS 1.0 was the first version to improve the SSL 3.0 by fixing known security issues and became the foundation of subsequent TLS version. What security measure does SSL and TLS provide against apps dropping? तो वो है डेटा इंक्रिप्शन के थ्रू, एनक्रिप्ट कर देते हैं हम डेटा को। What is the purpose of record protocol in the SSL TLS? To encrypt and authentication data. In the context of SSL TLS, what is the cipher shoot? तो ये क्या करता है? Is set of cryptographic algorithm and key size used for encryption. A option is the right option. What term describe an attempt to compromise the confidentiality, integrity or availability of computer system or network? तो वो है cyber attack. Which of the following is not common service provided by network security management? तो वो है denial of service. DOS is not a type of attack, not a security service. Which model provide a framework for understanding and improving network security policies and mechanisms? वो है CIA model. CIA confidential, इसका full name होता confidentiality, integrity and availability. देखिएगा, what does CIA stands for? अभी बताया था, A, B option is the right option. Which cryptographic concepts refers to the process of converting plain text into ciphertext? वो क्या करता है? Encryption करता है. What is plain text in the context of cryptography? There is a plain text को हम original message कहते हैं. Which components is required both encryption and decryption process in cryptographic system? वो private key. Symmetric cryptography में हम private key का use करते हैं. In asymmetric cryptography, what is the purpose of public key? तो to encrypt data. Public key से हम encrypt करते हैं data को. Which cryptography mechanism is primarily used for ensuring data integrity and authentication? वो होता है digital signature. What does decryption refers in the decryption का मतलब converting ciphertext into plain text. What cryptographic technique is used to authenticate the sender to of a message and ensure its integrity? वो है digital signature. In asymmetric cryptography, what is the purpose of private key? To decrypt data. के लिए हम क्या यूज करते हैं? Private key. What does the term crypto analysis? So the study of cryptographic algorithm and breaking them. यही crypto analysis होता है. Which cryptographic technique is used to verify integrity of a message without revealing its content? तो वह है hash function. What is the purpose of authentication in network security? To verify the identity of user and system. A, B option is the right option. Which cryptography mechanism uses a pair of key for encryption and decryption? Asymmetric. ये use करता public key for encryption and private key for uses a public key and private key pair of encryption and decryption के लिए, for decryption के लिए. What is the term of ciphertext? Ciphertext क्या होता है? Encrypted message होता है ये, जो हम original message को जब encrypt करते हैं. Which cryptographic concept involve the use of mathematical function to create a fixed size output of variable size output? तो वो hash function. What does the
term key represent in cryptography? A secret value used in encryption and decryption. In the context of network security, what is the purpose of encryption? To ensure confidentiality of data. तो बहुत अच्छे क्वेश्चन से। और देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़े थे ये सारे आईपी सेक्शन, केडीसी, जस्ट लाइक कैरबेरोस, अगर आपने पढ़े थे, एनक्रिप्शन पढ़ा था, तो डायरेक्ट दे सकते थे इनके आंसर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बाहर से आया हो, उन्हीं के टॉपिक के अंदर के ही आंसर हैं। पूरे वर्जन्स पूछ लिए, बताइए, सभी के टीएलएस वगैरह। तो अच्छा पेपर था। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू।